शीट मिला था कल वेक्टर्स का, ठीक है, कंप्लीट कर लेना उसको एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स रहेगा। कितने हैं उसमें क्वेश्चंस? 100 के अराउंड होंगे शायद, क्लोज टू अराउंड 100 क्वेश्चंस शुड बी देयर। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, यूनिट डायमेंशन। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, 2-3 क्लास में खत्म करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद आर मेन पार्ट, है ना, फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स एंड ऑल। सो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? Anything which can be measured. Okay, write on the definition. The quantities which can be measured. The quantities which can be measured. So in context of unit and dimension, इसको हम लोग divide करते हैं in terms of fundamental quantities and derived quantities, right? What are the fundamental quantities? Those which are independent of each other, isn't it? Just a mass, length, time, then luminous intensity. What else? Amount of substance, current. So these all are fundamental quantities, okay, or base quantities. So write down, in context of unit and dimension, in context of unit and dimension, we divide it under three separate categories. We divide it under three separate categories. First one, fundamental quantities. Fundamental quantities. Second one is derived quantities. And the third one is supplementary quantities. Supplementary quantities. Okay. Fundamental quantities are those which are independent of each other. Write down. Fundamental quantities are those which are independent of each other. And with the help of fundamental quantities, we can derive the other physical quantities. Okay. Those quantities will be calling it as derived quantities. With the help of fundamental quantities, we can derive the other physical quantities called derived quantities. So majorly these fundamental quantities or base quantity या फिर derived quantity की अगर बात करें, they will be following the rules of units and dimension, ठीक है? But when it comes to supplementary quantities, what are the supplementary quantities, by the way? Plane angle and solid angle. Okay, so they do not there are some rules of unit and dimension that they do not follow. Okay, जैसे multiplication division वगैरह नहीं कर सकते angles का, है ना? तो write on that point. Whereas base quantities का manipulation जब हम करते हैं या फिर derived quantities का जब manipulation करते हैं, तो over there we can go for division, multiplication, all those rules. Okay, so write down supplementary quantities. Supplementary quantities में लिखो plane angle and solid angle. Plane angle and solid angle. Write down. These quantities may or may not follow the rules of unit and dimensions. These quantities may or may not follow rules of unit and dimensions. Whereas fundamental quantities and derived quantities, for that all the manipulations are possible. तो वो सारे rules को follow करता है, ठीक है? How do you define a unit of a physical quantity? That standard reference, right, with which you are making the comparison. Just the length of this pen is, let's say, 5 centimeter. So that 1 centimeter is that standard reference with respect to which we are comparing the length. Okay, so write down, unit of a physical quantity is the standard reference. Unit of a physical quantity is the standard reference with which the standard reference with respect to which we compare the physical characteristics of an entity. ठीक है?
व्हाट इज द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट? अ यूनिट, यूनिट्स का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो नॉन लिविंग होना चाहिए, है ना? यू कैन नॉट कैरेक्टराइज अ लिविंग ऑब्जेक्ट एज अ यूनिट, राइट? जैसे वेट ऑफ king, or let's say the length of foot of the king used to be referred as the unit of length earlier, in early times, but usko fir change kiya gaya kyunki king can die. Okay, and after that how will you compare the quantities? So that's the reason why, like, it is important for this, like whenever we are defining a standard reference, that has to be a non-living object. Okay, right on this point, the standard reference has to be a non-living object. The standard reference has to be a non-living object. Second point likho, should be internationally accepted, should be internationally accepted, should be internationally accepted. अब जैसे like for all the physical fundamental quantities we have some kind of कुछ physical objects है, जैसे आप NCERT book में you will find the definition of all those quantities, like mass का क्या, sorry, 1 unit of length का क्या definition होता है, then 1 unit of time का क्या definition होता है. जैसे time का जो definition है, that is given in terms of velocity of sound, sorry, velocity of light. Okay, you'll find the definition. ऐसे याद रखने का जरूरत नहीं है, but already it has been, there are some definitions set by the Bureau of International Standard. Okay, basis which we have defined the standard reference, और उसी के respect में हम comparison करते हैं. ठीक है? अब now let's say if I talk about 1 kg of weight, तो 1 kg of weight के लिए there is something called as डिग्गी बोलते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ नाम है उसका. तो उसका क्या है कि प्लैटिनम का एक ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, एंड उसका जो वेट है दैट इज क्लोज टू अराउंड 1 kg. ठीक है, अब वो क्या है कि इट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. जो सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, एक तो उसको प्लेस किया गया है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कि कुछ भी सराउंडिंग का जो चेंजेस हो, एटमॉस्फेयर का जो चेंजेस हो, दैट शुड नॉट बी अफेक्टिंग द weight of that substance. Okay, and it was defined way earlier, like in 1922 or something like that, और तब से वो चला आ रहा था. ठीक है, 2019 में recently, very recently they have changed the definition of all these. मतलब rather than defining the standard reference to be a physical quantity, sorry, physical object, उसको किसी दूसरे वे में डिफाइन किया गया है ना. हाँ हाँ हाँ, मतलब we should not be defining a physical object as the standard reference because of that, like, हाँ, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में फिर वही एनसीईआरटी वाला चीज आ जाएगा. you'll have to stick to that definition given in 1889 1922, जो भी दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा तुमको. बट इन 2099, sorry, 2019, just for your knowledge, these all definitions have been, 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन को चेंज किया गया है. ठीक है, तो देयर हैव बीन चेंजेस मेड टू द डेफिनेशन ऑफ ऑल दोस. ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग थ्रू इट, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है ना, जैसे उसमें तुम देखोगे एक टेबल है. इन दैट टेबल दे हैव मेड द डेफिनेशन ऑफ ऑल द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. जस्ट गो थ्रू इट वंस. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेंबर एनीथिंग, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि डिफाइन कैसे किया गया है उनको. ठीक है, जैसे वही है कि आप जैसे मान लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, 1 सेकेंड को डिफाइन करने के लिए ये बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ, नहीं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, मतलब लाइट इन 1/2.99 into 10 to the power 8, something like that they have defined it. Okay, मतलब velocity of light के terms में उसको define किया गया actually. ठीक है, so the definitions that they have given is like while you are going through the definitions तुमको समझ में आएगा कि like they have been defined in a very different way. जैसे तुम सोचते हो वैसा हो नहीं सकता है. ठीक है, these are the different system of units. सबसे ज़्यादा widely accepted कौन सा है? International System of Unit, right? SI units. So FPS सिस्टम यूजुअली जैसे अब यूएस वगैरह में फॉलो किया जाता है इसको, है ना, फुट पाउंड एंड सेकेंड्स. एंड देन सीजीएस सिस्टम, व्हाट अबाउट दैट? सीजीएस सिस्टम को भी हम लोग यूज में लाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी, है ना, गॉसियन सिस्टम और सीजीएस सिस्टम. सो relatively smaller size of the units we define here. Okay, MKS system, again MKS system and SI system, you can say that as MKS is the सबसेट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. यहाँ पे हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं.
But when it comes to MKS system, these three had been marked as the fundamental physical quantities. Okay, mass, उसके बाद क्या हो जाता है बताओ? What are the M से क्या हो गया? मीटर. दिस इज किलोग्राम एंड दिस इज सेकेंड. ओके, सो मतलब MLT को बस अज्यूम किया गया था कि these are the fundamental quantities and basis which the naming has been done. But later on it was decided by the International Bureau of units and dimension that these 7 fundamental physical quantities can be taken which will be independent of each other, and basis those 7 fundamental physical quantities you can define all other quantities except for the supplementary quantities once again. Okay, so international system of unit में ही लिखो fundamental quantities क्या क्या है, उनका एक टेबल बनाओ. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक टेबल बनाओ ऐसा. फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट एंड द सिंबल. And I'll add one more column over here. एक और कॉलम मैं यहाँ पे ऐड करूंगा which is going to be your dimensional notation. Okay, dimensional notations. So for length it is capital L, for mass it is capital M, time it is capital T, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हम लोग K को भी यूज करते हैं और थीटा को भी यूज करते हैं. डिफरेंट बुक्स वुड बी यूजिंग दीज डिफरेंट नोटेशंस. कैंडेला के लिए CD होगा, इसके लिए I को यूज करते हैं और A को यूज करते हैं नोटेशन वाइज. एंड अगेन दिस इज मोल्ड. ठीक है, these are the dimensional notations. Okay, and basis this dimensional notation will be deciding the dimensional formula of a given physical quantity. Okay, write down. How do you define dimension of a given physical quantity? Unit तो समझ में आता है कि that standard reference with which the comparison is made. How do you define the dimension of a physical quantity? The power to which all the fundamental quantities are raised in order to express the physical quantity. That power will be called as dimensions. ठीक है, जैसे if I have to say the dimension of force in length is 1. Okay, that way we can define it. So you need to remember that dimensional formula हो जाएगा MLT to the power minus 1, but when it comes to dimension of force in length, so that will be 1. जो power होता है उसको हम लोग define करते हैं उस तरह से. Write down this point. Dimension of a physical quantity, dimension of a physical quantity is the power to which
is the power to which the fundamental quantities are raised. The fundamental quantities are raised in order to express that, in order to express that physical quantity, in order to express that physical quantity. Just if you want to write, you can write down like this. The dimension of force in length is 1. The dimension of force in length is 1. That is the power to which capital L is raised, है ना, while defining the dimensional formula. लिख लिया इसको, टेबल को. Anyway, you can write it on your own, no? In quantities को बस लिख लो. Now these supplementary quantities, plane angle, I suppose you already know, right? Capital L, sorry, L, R और theta के बीच में relation हो जाता है. क्या आ जाता है यहाँ पे बताओ? Theta is equal to L upon R. When you are dividing the two lengths, you have to define it in terms of what? Radians. Okay, so radian is going to be the unit for this. Even though dimensionally it doesn't have any dimension, right? Length को तुमने length से divide कर दिया, तो फिर dimension क्या होगा? There is no dimension, right? Dimensionless quantity है. But at the same time इसका जो unit होता है वो radians हो जाता है. What about solid angle? हाँ, मतलब spherical cap, any surface for that matter, any surface can subtend a angle at a given point. Okay, so the angle subtended by a surface at a given point will be the solid angle. So just for the sake of example, like जैसे अब मान लो कि ये एक डिस्क है, ठीक है, जैसे just to physically define it, जैसे मान लो वाटरमेलन है एक, ठीक है, उसको तुम कट करते हो, 4 साइड से तुमने कट लगाया और उसको तुमने निकाला ऐसे. So whatever angle it is subtending at the apex, that surface, spherical surface जो subtend कर रहा है, that angle will be the solid angle. Okay, तो ये जैसे मान लो कि एक डिस्क है and we are constructing a cone out of it, ठीक है, we are constructing a cone out of this ऐसे, ठीक है. तो बेसिकली इस ये वाला डिस्क इस वाले पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टेक नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ दिस डिस्क, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जैसा ले लो और उसको ज्वाइन कर दो इस वाले पॉइंट पे, एंड सी द 3 डायमेंशनल एंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड एट द एपेक्स. दैट एंगल विल बी द सॉलिड एंगल. ओके, इसका फिजिकली लाइक इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे लोकेटेड है, लेट्स से द ऑब्जर्वर इज लोकेटेड ओवर हियर, what is the area perceived by him? What is this area perceived by him? So if he is along the axis of this cone, उसको ये पूरा का पूरा एरिया दिखाई देगा, मैक्सिमम एरिया, है ना. वही अगर वो ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं पे होता, लेट्स से द ऑब्जर्वर वुड हैव बीन लोकेटेड ओवर हियर, तो यहाँ पे तुम क्या करते कि अगेन पेरिफेरी से बहुत सारे लाइंस लेके आते और इसको ज्वाइन करते, राइट, इस तरह से, ठीक है. तो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ एरिया विल बी विजिबल टू हिम? टेल मी, will that be the maximum possible area? maximum possible area तभी visible होगा जब ये यहाँ से देखेगा ना, एक्सेस ऑफ द कोन से. इधर से अगर वो देखता है तो उसको फील होगा कि ये इलिप्टिकल एरिया टाइप का है ना. जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था एक बेसिक मैथ्स का, इन विच द प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कल वाज टर्निंग इनटू एन एलिप्स, है ना, वही चीज हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे. तो ये इलिप्टिकल एरिया इसको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है. तो हाउ द ऑब्जर्वर इज परसीविंग द एरिया, दैट इज व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है. इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना हो, इफ यू वांट टू मैथमेटिकली डिफाइन इट, आई विल टेक अ वेरी स्मॉल एरिया. बड़े एरिया के लिए हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं इसको. बड़े एरिया के लिए फिर अगेन हम लोग कैलकुलस पे रिलाई करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट. सो व्हाट विल बी डूइंग इन दिस केसेस कि लेट्स से इफ आई हैव अ वेरी स्मॉल एरिया लाइक दिस, ऐसा है, एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, एंड इस पॉइंट पे तुम निकालना चाहते हो कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया. सो लाइक आई टोल्ड यू, ज्वाइन करोगे तुम यहाँ पे पेरिफेरी से इसको, एंड देन द ऑब्जर्वर इज लोकेटेड ओवर हियर, ठीक है. तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट द एरिया दैट ही इज परसीविंग इज गोइंग टू बी दिस एरिया, है ना. उसको दिखाई देगा इस लाइन के अलॉन्ग ये वाला एरिया, है ना. वही अगर मान लो एक्सिस, इसके एक्सिस पे अगर कोई रहता, इसको अगर एक बेस मान ले और कोन कंस्ट्रक्ट करे, तो ये पूरा एरिया दिखाई देता है उसको, ठीक है. दिस इज द एरिया दैट ही इज गोइंग टू परसीव इन दिस केस, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस कि ये जो नॉर्मल होगा इसका मतलब along the line of vision of this person who is
standing over there will be along this direction. Okay, इस डायरेक्शन में हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस प्रोजेक्शन एरिया. एंड इस वाले एरिया का एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, राइट? सो इस वाले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है? सो आई विल बी कॉलिंग दिस एज डी ए वेक्टर and this I am calling as n vector. Okay, n cap vector. N cap vector is going to be the line of sight of the person, okay, who is defining the solid angle at that point. So this angle is, let's say, theta. Then in that case, this solid angle is d omega. Symbolically it is represented by omega, can be given as dA vector dot with n cap vector whole divided by r square. Okay, r square is going to be the radial distance, which is going to be constant since we have taken a very small area, patch of area. Okay, so dA dot n cap divided by r square will be the value of d omega in this case. ठीक है, अगेन डॉट प्रोडक्ट है इसका, तो ये स्केलर आ जाएगा इधर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू? अगर ये एंगल थीटा है, देन दिस विल बी dA cos theta divided by r square. And once you integrate it, let's say if you have a bigger patch of area and you want to find out the solid angle at a given point, तो मतलब उन सारे छोटे छोटे एरियाज के लिए तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ dA cos theta विल बी गिविंग यू द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड. ठीक है, तो मतलब सपोज फॉर अ बिगर पैच इफ यू आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जैसे हो गया सॉलिड एंगल. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द सॉलिड एंगल. सो विल बी टेकिंग स्मॉल स्मॉल एरियाज, उनके वजह से सॉलिड एंगल निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे उसको. एंड द इंटीग्रेशन फॉर दैट विल बी टर्निंग इनटू ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dA cos theta होल डिवाइड बाई r स्क्वायर. ओके, ठीक है, तो ऐसे इसको हम डिफाइन करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में काफ़ी ज़्यादा इसका एप्लीकेशन आता है. सो देयर वी विल सी इन डिटेल्स ऑल्सो कैलकुलेशन कैसे होगा. ऐसे फॉर अ डिस्क व्हाट इज द सॉलिड एंगल, आई थिंक दैट यू शुड रिमेंबर एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. लाइक वी कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द क्वेश्चन इवन इन अदर टॉपिक्स एज वेल. तो ये डिस्क का जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड होता है एट द एपेक्स ऑफ द कोन, let's say the semi vertical angle is going to be theta. So that solid angle subtended at this point will be given as what? 2 pi into 1 minus cos theta. ठीक है, and solid angle subtended at the center of a sphere is, हाँ, क्योंकि एरिया वेक्टर और एन वेक्टर अगर तुम सेंटर पे बैठ जाओ तो तुम्हारा जो लाइन ऑफ साइट होगा वो किधर होगा? एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ही होगा. तो एरिया वेक्टर एंड एन वेक्टर इन दैट केस आर इन द सेम डायरेक्शन. तो डॉट प्रोडक्ट अगर तुम लोगे तो dA बाई आर स्क्वायर आ जाएगा वो. ठीक है, and integral dA by r square will be turning into what? 4 pi r square divided by r square, which is equal to 4 pi. So you can write this note as well. The solid angle subtended at the center of a sphere, the solid angle subtended at the center of the sphere by the spherical surface, solid angle subtended by the at the center of the sphere by the spherical surface, solid angle subtended at the center of the sphere by the spherical surface is 4 pi steradians, STR. Solid angle subtended at the center of a sphere by the spherical surface is 4 pi steradians. Again, this disk wala logic is also coming from a spherical surface only. अगर मैं एक इसके अराउंड स्फेरिकल सरफेस ऐसा कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो उस केस में ये वाला जो स्फेरिकल कैप है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू सबटेंड द सेम सॉलिड एंगल एट दैट पॉइंट. In fact, not just spherical cap, you take any arbitrary surface for that matter, ऐसा ले लो, तब भी वो वैसा ही सॉलिड एंगल सबटेंड करने वाला है वहाँ पे. बिकॉज अगेन यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, जो पेरीफेरी है वहाँ से लाइंस लेके आओगे और उसको ज्वाइन कर दो. ठीक है, फाइन. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं. जैसे पहला हो गया मान लो फोर्स. तो फोर्स का इफ यू आर अवेयर अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्मूला यू कैन वेरी वेल डिफाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला. बहुत जल्दी से आ जाएगा. मास टाइम्स एक्सेलरेशन जैसे इसको लिखते हो. सो हाउ डू यू डिफाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस? मास के लिए कैपिटल M, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए L and time के लिए t minus 2, right? Similarly, the second one is, let's say, energy.
तो एनर्जी के लिए कोई भी एनर्जी ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर या 3/2 kT, वॉट एवर, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विल हैव सेम डायमेंशन. ओके, सो हाफ एम वी स्क्वायर अगर यूज करते हैं तो बेसिस दैट वी कैन से द वैल्यू विल बी ml² T⁻². ठीक है. तीसरा जैसे हो गया, मान लो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. टॉर्क, वर्क. ठीक है. नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी पढ़ा है क्या तुमने? तुमने नहीं पढ़ा है विस्कोसिटी? तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है. ओके, फाइन. इसको मैं डिफाइन कर दूंगा फॉर्मूला के टर्म्स में. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. 7th में ले लेते हैं, मान लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. 8th में ले लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी. परमिएबिलिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. इन क्वांटिटीज का हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला. तो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, दीज ऑल थिंग्स आर नोन टू यू ऑलरेडी, राइट? एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते थे, टॉर्क को कैसे डिफाइन करते थे? व्हाट वाज एंगुलर मोमेंटम, टेल मी? mvr, है ना? पार्टिकल के लिए mvr डिफाइन करते हैं, मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस. टॉर्क क्या होता था? r क्रॉस f. वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सो फोर्स, विस्कस फोर्स ऑन अ बॉडी while it is in a medium is given by coefficient of viscosity neta multiplied by a multiplied by delta v by delta x. वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, है ना? वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोल देंगे हम लोग. दिस इज हाउ वी डिफाइन द विस्कस फोर्स. तो तुम नीटा का डायमेंशन निकाल सकते हो. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है. एनर्जी, है ना? जैसे एनर्जी कैन बी गिवन एज 3/2 kT. ठीक है. Energy can be given as 3/2 kT in terms of Boltzmann constant. So this k you are supposed to find out the dimension of. Absolute permittivity. This I believe you know, right? Electrostatic force between two charges. वहाँ से तुम absolute permittivity का निकाल लोगे dimension. Permeability. Magnetism में पढ़ा होगा इसके बारे में. Magnetism नहीं पढ़ा है. Okay. ठीक है, तो फिर फॉर्मूला में दे देता हूँ यहाँ पे. जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई by 2r. Okay, I is current, r is distance, mu naught is the absolute permeability. ठीक है. b है मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स से कैसे रिलेट करते हैं, दैट ऑल्सो आई राइट डाउन हियर, जिससे कि तुम अदर क्वांटिटीज को भी निकाल सको. फोर्स को लिखते हैं हम लोग क्यू वी बी, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स रिलेशनशिप इज नोन टू यू. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तुमको पता है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई इंटू ए, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई इंटू ए, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी इंटू ए. ठीक है. तो कैलकुलेट करो इन सब का डायमेंशंस.
एंगुलर मोमेंटम का क्या आया बताओ? mvr, है ना? मास लेंथ का स्क्वायर t-1, करेक्ट? देन टॉर्क, टॉर्क एनर्जी वर्क सबका एक ही आएगा ना, सो यू विल बी गेटिंग दिस एज ml square t to the power -1 -2 ml square t to the power -2, because work is anyway equal to energy, right? Total work done is equal to change in kinetic energy. Coefficient of viscosity का क्या आया? F delta x by delta v into a, है ना? क्या आ जाएगा? ऊपर वाला वर्क है और नीचे वाला वेलोसिटी LT-1, एरिया इज L स्क्वायर, ओके? कितना आ जाता है ये? m, m आएगा? m तो आएगा, और क्या आएगा? ये ml स्क्वायर आया, ये वाला l स्क्वायर, ये वाला l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास कितना? ml-1, राइट? ml-1, व्हाट एल्स? t इनवर्स या t? t आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे है t-1, ऊपर आके t बन गया वो, ml इनवर्स इंटू t। वैसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का 2/3 e by t, तो ml स्क्वायर t-2, ये एनर्जी का हो गया, डिवाइड बाय टेम्परेचर है सिंपली, तो k लिख देते हैं, k इनवर्स, करेक्ट? दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी देखो वैसे ही इसको, कितना आ जाता है डायमेंशन इसका? q स्क्वायर डिवाइड बाय एफ आर स्क्वायर, राइट? q स्क्वायर डिवाइड बाय एफ आर स्क्वायर, q1 q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है ना, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके चले गए, तो q स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर, तो q स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम लोग? आई टी, है ना? आई इंटू टी, और ए इंटू टी, तो क्या आ जाएगा ये? एफ आर स्क्वायर अगेन, तो एफ आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी ml⁻³ t टू द पावर -2, एनर्जी इंटू डिस्टेंस हो गया, है ना? एफ आर स्क्वायर, एफ आर इज एनर्जी एंड डिस्टेंस, तो ml⁻³ माइनस t टू द पावर -2, दैट विल कम अप, क्या आ जाएगा वो? m-1 l-3 टी स्क्वायर, एंड बचता है अपने पास आई स्क्वायर टी स्क्वायर, तो t⁻4 बन गया ये, एंड यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो m इनवर्स l⁻³ t⁻4 आई स्क्वायर और ए स्क्वायर, एनीथिंग इज फाइन। वैसे ही बाकी का भी निकाल लो, परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन इजी, फोर्स बाई चार्ज हो जाता है ना? तो फोर्स बाई चार्ज इज व्हाट? ml-2, और हाँ, तो ml⁻³ आई इनवर्स, ओके? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। फ्लक्स का E इंटू ए,
तो इसी में एल स्क्वायर को जोड़ देंगे तो ml3 t-3 i-1। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम वे, परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालो। These two formulas you can make use of. Magnetic field B is equal to mu naught I by 2r. I is current, r is distance, and force को define करते हैं magnetic force को Q times V times B, charge into velocity into magnetic field. Okay. यहाँ से तुम B को निकालो और फिर यहाँ से म्यू नॉट को निकाल लो। So magnetic field का क्या आ जाता है? Dimension. Dimensional formula for this magnetic field, force by charge into velocity. तो force is ml t to the power -2, चार्ज का नीचे में आ जाएगा आई टी, एंड वेलोसिटी का आ जाएगा एल टी -1। तो एल टी -1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास एम टी टू दी पावर -1 ऊपर और आई टी नीचे। तो मतलब एम टी टू दी पावर -2 आई इनवर्स, ये आ रहा है क्या? एम टी टू दी पावर -2 आई इनवर्स एफ बाई क्यू बी, फोर्स इज एम एल टी टू दी पावर -2, वेलोसिटी इज एल टी -1, तो एल टी -1 तो चला जाएगा, बचेगा नीचे बस आई टी और ऊपर एम टी -1। सो आई टी टू द पावर -2, सॉरी एम टी टू द पावर -2 आई इनवर्स। ठीक है, एंड वंस यू गेट द मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन यू कैन इक्वेट दैट एज डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, करंट का तो आई ही होगा, डिवाइड बाई 2r, सो r के लिए l। ठीक है, दिस इज डायमेंशन ऑफ b, एम एल सॉरी एम आई इनवर्स टी टू द पावर -2। सो i का पावर -2 आ जाएगा और l का पावर 1 आ जाएगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग m t minus I -2। okay, this is permeability का dimension। ठीक है, तो once you know the relationship between the physical quantities it is easy to figure out the dimensional formula। okay, write down the dimensional write down application of dimensional analysis, application of dimensional analysis। so these are the four applications that we are going to see। okay, और इन पे क्वेश्चंस बनता है जेई एडवांस में, तो एक क्वेश्चन डायमेंशन से आता है, एक क्वेश्चन मेजरमेंट से आता है यूजुअली। ओके, यूनिट कन्वर्जन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, derivation of relation between physical quantities। okay, these are the four applications that we are going to see। जैसे यूनिट कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुआ, मान लो कि फोर्स को 1 न्यूटन बोलते हैं हम लोग इसमें ऐसा यूनिट में, आई वांट यू टू टेल मी द numerical value in CGS unit, numerical value in CGS unit। so if you know the dimensional formula it is easy to figure out that। okay, so write down first one, the unit conversion of physical quantity। okay, so 1 Newton is equal to how many dynes? now this unit need not be expressed in plural form, है ना, इसको सिंगुलर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, न्यूटन्स नहीं होगा, न्यूटन ही होगा, डाइन्स नहीं होगा, डाइन ही होगा, है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, सीजीएस यूनिट हो गया डाइन इसका। तो इन जनरल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कैन आई से कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। जैसे 1 kg, 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज द यूनिट। ओके,
So physical quantity can be expressed in this form. And unit conversion, does it make any change to the physical quantity? 1 kg को 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें? 1000 ग्राम, उससे उसका कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज नहीं हो जाएगा. सो वाइल यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन system of unit to other system of unit, there's no effect on the measurement of a physical quantity. Okay, so this we can write it as, let's say n1 u1 हो गया एक physical एक system of unit में. This can be equated with n2 u2, right? ठीक है, दूसरे system of unit में. इसी का यूज करके यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करते हैं. So numerical value of this 1 Newton, can I write in terms of base unit as kg meter per second square? लिख सकते हैं इसको ऐसे, kg meter per second square. This will be equal to x, मान लेते हैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस टर्म्स. डाइन को ऐसे लिख देंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में. नाउ दिस x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 kg by ग्राम मीटर बाय सेंटीमीटर. सेकेंड इनवर्स तो एनीवे कैंसिल हो जाएगा, है ना? इन दोनों को हमें यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है. तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? इफ वी कैंसिल दीज टू, हाउ मच डू आई गेट हियर? 10 to the power -3 ना. और 1 centimeter in terms of meter, 10 to the power 2. So we are finally getting the value as 10 to the power 5. We can say 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. ठीक है, वैसे ही तुमको अब यहाँ पे निकालना है टेन जूल इन टर्म्स ऑफ अर्क. 10 joules in terms of arc. Arc is the CGS unit once again, energy का. कितना आ गया? 10 power 8, 6 आता है शायद. अच्छा 10 power 7 आ जाएगा शायद, आई थिंक. अच्छा हाँ, 1 के लिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. 1 जूल इज इक्वल टू 10 power 7 आ जाएगा. दिस विल बी 10 to the power 8, राइट. सो 10 kg meter square per second square is equal to x gram centimeter square per second square. So the second square we will cancel first, बचता है ये वाला terms. X will be equal to 10 times kg by gram is 10 to the power 3, meter square by centimeter square 10 power 4, right? 10 to the power 4. So the value comes out to be 10 power 8. Okay, so 10 joule is equal to 10 power 8 erg. This you can directly tell me क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? ग्राम पर सीसी दिया हुआ है यहाँ पे. कौन सा आ जाएगा? 10 to power -3 होता है ना, जैसे 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी, उसको 1 ग्राम पर सीसी लिखते हो तुम, है ना? तो ये ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है और तुमको केजी में कन्वर्ट करना है इसको. या तो कन्वर्जन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 10 to the power 3 आ जाएगा ना, ये -3 नहीं 3. देखो SI unit of length is meter. We adopt a new unit of length which is equal to x meter. So 1 meter square expressed in terms of new unit has a magnitude of how much? Will it be x square or 1 by x square?
न्यू सिस्टम में बोला हुआ है कि यूनिट ऑफ लेंथ इज एक्स मीटर, तो तुम ले लो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 विल ऑलवेज वर्क नो एनीवे। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू y बोल देते हैं इसको क्योंकि x ऑलरेडी दे रखा है, तो x लेंथ का जो भी स्क्वायर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ का स्क्वायर को क्या बोलोगे तुम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जैसा बोलोगे ना। 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज एक्स मीटर, so that means L square will turn into x square. So can I say y will be equal to 1 upon x square? ये आएगा ना वैल्यू, the value is d, so the answer is going to be d, this one. In a certain system of unit, 1 unit of time is 5 seconds, 1 unit of mass is 20 kg and length is 10 meter. So 1 unit of power will correspond to how much in this system? इस वाले सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, मतलब एसआई सिस्टम वाला अब अननोन हो गया है ना, एंड ये वाला जो सिस्टम है वो नोन है तुमको। 1 यूनिट ऑफ पावर इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वॉट विल बी हाउ मच। देखो कैलकुलेट करो इसको, विल इट बी 16, 1/16 क्या होगा, एक्स क्या है यहाँ पे, पावर का यूनिट क्या हो जाता है, एनर्जी बाई टाइम, है ना। दैट मीन्स kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 3, राइट, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 3, दिस शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 kg की जगह पे यहाँ पे लिखोगे 20 kg, मीटर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 मीटर का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई सेकेंड टू द पावर 3, दैट मीन्स 5 सेकेंड का पावर 3, राइट। So now you find out the value of x from here. kg गया, मीटर स्क्वायर गया, सेकेंड पावर 3 गया, what exactly we are left with, ये 20 into 10 का स्क्वायर बाय 5 का क्यूब आ गया, so this will be 2000 by 125, right, 2000 divided by 125, 16 watts, okay, so value of x in this case is 16 watts, watt, है ना। ठीक है, write down to check the dimensional correctness of an equation, इसी में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। राइट डाउन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, दिस एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल इन ऑप्शन चेकिंग, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करता है बहुत। जैसे मेंस में लाइक दे हैव गिवन कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके तुम निकालोगे उसको, ठीक है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे कि कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया, तुमको आइडिया नहीं है, बट डायमेंशंस हैव बीन गिवन, ऑप्शन एलिमिनेशन से 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा था डायमेंशन चेक करके। So to check the dimensional correctness of a equation, so whenever a physical quantity is separated by these all algebraic operations, उस केस में क्या होता है कि उनका डायमेंशन सेम होता है। कंपैरिजन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद वेलोसिटी, राइट। ऐसे ही प्लस माइनस जब हम करते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो वो भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ही होता है। फोर्स को फोर्स से ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही ऐड कर सकते हैं, है ना। राइट ऑन दिस पॉइंट, the physical quantities separated by these all symbols have the same physical dimensions, have the same dimensions, have the same dimensions, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, all these functions will be dimensionless। जैसे a exponential minus x square if I'm writing, so exponential minus x square is going to be dimensionless quantity, okay। Write out this way, all exponential trigonometric logarithmic functions and their exponent or argument are dimensionless,
all exponential, trigonometric and logarithmic functions and their exponents or arguments and their exponents and arguments are dimensionless. अगेन एनी वे ऑल पावर्स आर डायमेंशनलेस यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंशियल के लिए वैलिड हो जाएगा. तो सपोज इफ आई एम राइटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज गिवन बाय a sin of omega t minus kx. ठीक है, ये वेव इक्वेशन तुम आगे चल के देखोगे. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a इन दिस केस अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है तो displacement only because the sine function is a dimensionless function. Okay, now coming to this bracket argument में अगर आए तो t is time, x is displacement, तो ओमेगा का क्या आ जाएगा यहाँ पे डायमेंशन. यू कैन अंडरस्टैंड कि डायमेंशनलेस होने के लिए सबसे पहले तो ये माइनस है, दोनों को डायमेंशनलेस अलग अलग से होना पड़ेगा. ओमेगा का डायमेंशन विल बी सेम एज t इनवर्स, राइट, एंड k का डायमेंशन विल बी सेम एज l इनवर्स. ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन. The position of a particle is given by xt is equal to v naught by alpha into 1 minus exponential minus alpha t. V naught is constant, alpha is greater than 0. तो देख के क्या पता चल रहा है अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होकर डायमेंशनलेस होना चाहिए इसको. एंड अगर अल्फा का डायमेंशन टी इनवर्स हुआ तो वी नॉट का डायमेंशन क्या आ जाएगा फिर, टी इनवर्स नीचे है, ऊपर जाके टी आ जाएगा वो. ठीक है, तो कितना आ जाएगा फिर, ये एल टी इनवर्स ही आएगा, है ना. एल टी इनवर्स इज गोइंग टू बी द आंसर. द आंसर फॉर दिस इज एल टी इनवर्स एंड टी इनवर्स. ओके, दिस वन. एम जीरो भी लिख देते हैं कभी कभी ऐसे. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस. ए बी सी डी का निकाल लोगे डायमेंशन यहाँ पे, ए का एक्स जैसा, बी का एक्स बाई टी जैसा. हाँ, rule out the wrong formulas on dimensional ground. A is maximum displacement of the particle. Y is displacement of particle undergoing a certain periodic motion. तो क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट. इन ऑल अदर केसेस साइन को छोड़ के ए ही बचा हुआ है हमारे पास, है ना. बी सी वाले ऑप्शन में बस टी से डिवाइडेड है वो, विच इज टाइम. तो डायमेंशनली इट इज रॉन्ग. नाउ दिस ऑल्सो टेल्स यू, दिस क्वेश्चन ऑल्सो टेल्स यू कि डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम लोग करेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं. ठीक है, द एज पर द डायमेंशनल एनालिसिस ऑल थ्री आर करेक्ट, ये तीनों करेक्ट है ना. ओनली दिस इज रॉन्ग. ठीक है, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर. तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से यू कैन नॉट डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना. देखो इसको, a by b, c by d. What are a and b first? Tell me. f का जो डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, वही b का डायमेंशन होगा, राइट. c, check whether it is correct. c का आ जाएगा t minus 1, this is l minus 1, this is mlt minus 1 minus 2, and this is also mlt minus 2. ठीक है, c करेक्ट है. a by b, हाँ a by b is anyway, ठीक है, एंड ठीक है, करेक्ट है. ए वाई प्लस टैन सी जेड कर लोगे इसको फिर ना, वैसा ही है लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही. दिस वन, दिस ऑल्सो यू कैन डू दैट. यू इज गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी, तो के का वही डायमेंशन जो यू का डायमेंशन, एंड ए का डायमेंशन एल माइनस 1. ओके,
This is multi correct. Tell me the answer for this. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। सी टी एंड लैम्डा का डायमेंशन सेम होना चाहिए, करेक्ट है वो। एक्स एंड लैम्डा का भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो डायमेंशन लेस हो पाएगा। 2 पाई c/λ इज सेम एज 2 पाई x/λ t, करेक्ट है वो भी, है ना। दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से आ जाएगा। c/λ इज सेम एज x/λ, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये तुम्हारा करेक्टेड फॉर्म ऑफ दैट वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन। इसे पूछ रहा है कांस्टेंट ए का बता दो डायमेंशन क्या होगा, निकालो। बी का डायमेंशन क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम जैसा, L पावर 3, एंड देन निकालो, कैलकुलेट करो उसको। प्रेशर से इक्वेट किया गया है इसको। हम्म, इसको ही तो बस पकड़ना है हमें। वी हैव टू कैच होल्ड ऑफ दिस। ए डिवाइड बाई के का पावर हाफ, दिस इज एल क्यूब एंड दिस इज ऑल्सो एल क्यूब, तो L पावर 6 इज इक्वल टू प्रेशर हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ml T⁻⁻² डिवाइड बाई एरिया इज L², ठीक है। तो ए का डायमेंशन क्या आ गया, ml-1, ml5 हो जाएगा ये, ml5 T-2 के हाफ, okay, this is going to be the dimension, ml5 T-2 के हाफ। सरफेस टेंशन, ठीक है, इसमें तो गायब है लेफ्ट वाला, दिस इज ऑल्सो गॉन काइंड ऑफ, ओके। राइट ऑन डेरिवेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, derivation of a relation between physical quantities. This is one of the most important part, especially in dimensional analysis, क्योंकि इससे बहुत बड़ा एडवांस में पूछा जाता है क्वेश्चन। Derivation of a relation between given physical quantities. So usually you'll find this kind of a question here कि the dependency of one physical quantity over the other physical quantity they'll give you and they'll ask you to derive the relationship. जैसे क्वेश्चन लिख लो एक, उसी पे हम लोग देख लेते हैं। The time period of a simple pendulum, the time period of a simple pendulum is dependent upon, time period of a simple pendulum is dependent upon length of the thread, length of the thread and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity. Determine the correct relationship, determine the correct relationship. So how do we do this? तो dependency is only given कि हाँ इन पे dependent है, but how it is dependent is not given to us. Using dimensions we can actually find it out. तो जो time का dimension होगा that should be matching with the dimension of what? Length और gravity दोनों आना चाहिए उसमें। तो कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज कांस्टेंट का वैल्यू एनीवे वी कैन नॉट फाइंड आउट, दिस इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच इन दिस केस इज 2 पाई, राइट। 2 पाई √L/G लिखते हैं इसको। तो k टाइम्स L⁻A वी विल राइट लेंथ, एंड ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है तो G⁻B लिख देते हैं इसको, ठीक है। जो टाइम का डायमेंशन है दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल T ओनली। राइट हैंड साइड में अपने पास क्या आ जाएगा, L⁻A यहाँ पे बचा, और यहाँ से आ जाएगा L_T-2 का पावर B. So if we rearrange the power, what do we get here? L power A plus B
e power minus 2b. Using the comparison of powers we can very quickly find out the value, है ना. 2b is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1, right. -2b is equal to 1. So b is minus half. And what about a? A plus b is 0, which means a is equal to half. So the correct relationship goes like this. Time period हो जाएगा k times L का power half, g का power minus half, which is equal to k times under root L by g. Though it is not able to tell you about the constant again, but एक relationship establish करके दे दिया है ना. So do it for force, pressure, density and velocity. लिखो. The relationship, नहीं, ऐसे लिखो. Force exerted by a jet of liquid, force exerted by a jet of liquid depends on density of the liquid, depends on density of the liquid, area of cross section of the jet, area of cross section of the jet, and the velocity with which it hits the surface, and the velocity with which it hits the surface, and the velocity with which it hits the surface. Determine the correct relationship between them. Determine the correct relationship of force with the other quantities. तो अभी तक लिमिटेशंस हमने क्या क्या देख लिया. कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं किया जा सकता यहाँ से यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. सेकेंड पॉइंट दैट वी कैन मेक यूज ऑफ इज की द इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स एक्सपोनेंशियल, साइनोसॉइडल, लोगरिथमिक फंक्शंस, क्या उसको डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस हो गया ना. जैसे वेव इक्वेशन को नहीं डिराइव कर सकते हम लोग यहाँ पे. देन क्या आया, रो ए बी स्क्वायर. ठीक है. तो रो ए बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. ये वही क्वेश्चन दिया हुआ है. अंशु आ गया. रो ए बी स्क्वायर. Pressure is dependent upon the density and the dimensions. Dimension of velocity is what they are asking you. क्या आ जाएगा ये? HCV both of you have, no? है ना, तुम्हारे पास नहीं है. ओके. ठीक है, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा. HCV ऑब्जेक्टिव्स को देख के आना इसमें. ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में. ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2. सॉफ्ट कॉपी यू हैव. ओके. ठीक है. तो HCV का ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 देख के आना इसमें. अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उसमें. फिजिकल वर्ल्ड करके होगा चैप्टर उसमें HCV में. Dimensions of velocity.
अगेन एल टी माइनस वन, इसमें तो डायरेक्टली बोल सकते हैं प्रेशर जैसे हो गया, तो प्रेशर का हो जाएगा एम एल इनवर्स टी माइनस टू पावर ए, एंड डेंसिटी है तो डेंसिटी का हो जाता है अपने पास मास पर यूनिट वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री पावर बी। ओके, तो क्या आ गया यहाँ से, मास का अगर कोलेट करते हैं पावर को, दिस इज एम ए प्लस बी माइनस ए माइनस थ्री बी माइनस टू ए, राइट? So now we can calculate the value. Minus 2a is equal to minus 1, which means a is equal to half. And a is equal to half, तो a plus b is equal to क्या लिख देंगे, 0. तो b is equal to minus half. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए। क्लियर? ये तो ऐसे हमने देखा है अभी अभी ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तुमको देखने में मिलेगा कि लेट्स से इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट वेलोसिटी देन फोर्स then time, they are chosen as base units. So can they be chosen as base unit or not, whether it is the right choice or not? मतलब एक अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें हमने क्या किया, फोर्स वेलोसिटी और टाइम को बेस यूनिट जैसा चूज किया, तो क्या हम चूज कर सकते हैं वैसे या नहीं कर सकते? जैसे यूजुअली तो यही होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज तुमने देखा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सेट बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, but now I am making my own system of unit wherein I am selecting force velocity and time. Can I do that? हाँ, मतलब if any of these physical quantity can be derived using the other fundamental physical quantity, you cannot choose that. Okay, तो फोर्स वेलोसिटी टाइम में तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का यूज करके तुम फोर्स को नहीं डिराइव कर सकते, फोर्स वेलोसिटी का यूज करके टाइम को नहीं डिराइव कर सकते, मास रह जाएगा, है ना। हाँ, तो फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम इज अ राइट चॉइस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देयर। ओके, then tell me, force is proportional to different power of these quantities, F is equal to K times V क्यू, वॉल्यूम है ना V, अच्छा स्पीड है, ओके, बाई आर, ऐसा कुछ आता है 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का, विस्कस फोर्स का, मतलब ईटा आर और वी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, देखो एक बार। 6 पाई इज दैट कांस्टेंट, ईटा आर वी पे डिपेंडेंट होना चाहिए, दैट इज व्हाट दे हैव गिवन, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ईटा पावर ए आर पावर बी वेलोसिटी पावर सी। नाउ व्हाट वाज ईटा इक्वल टू, क्या आया था, विस्कस फोर्स बाई एरिया डेल्टा एक्स डेल्टा वी, है ना, ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फोर्स, तो ये आ गया था अपने पास एम एल टी टू दी पावर माइनस टू
इंटू टी एल, एनर्जी है ना, एम एल स्क्वायर टी टू द माइनस टू एल स्क्वायर एल टी माइनस वन. So L square will get cancelled out. We are getting the dimension as ml inverse T inverse, right? ml inverse T inverse. So now suppose if I substitute the value, so this will be turning into ml inverse T inverse power A, L ka power B, velocity is LT minus 1 power C. So this turns into m ka power A, L ka power minus A plus B plus C. माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है. टी का पावर माइनस ए माइनस सी, ठीक है. सो एंड दिस साइड वी हैव एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू, सॉरी. ए इज इक्वल टू वन आ गया. सी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू. तो माइनस वन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू, विच मीन्स सी इज इक्वल टू वन, करेक्ट. तो सी का वैल्यू आ गया वन. एंड बीच वाला तो माइनस वन प्लस बी प्लस वन is equal to 1. So B is also equal to 1 only. All three are 1. So eta RV is what it is proportional to. ये वाला फॉर्मूला जस्टिफाई हो जाता है इससे, है ना. इसको देख लो. Momentum, area and time are taken as fundamental units. Then the dimensional formula for the coefficient of viscosity is. Now this is also not different from what we have done till now. बस ये रहेगा कि तुम मोमेंटम, एरिया और टाइम को ले लो फिजिकल क्वांटिटी जैसा रादर देन बेस क्वांटिटीज. फिर फाइनली जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तब उसके टर्म्स में लिख देना. आ गया. ए देखते हैं. करेक्ट करेक्ट है. बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ईटा का क्या था डायमेंशन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और इससे ये पता चल रहा है दिस इज एम एल टी माइनस वन बाई एल स्क्वायर है, विच इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन. तो वो दोनों इक्वेट हो जा रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. बट इन जनरल कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ये तुम्हारा विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी का डायमेंशन यहाँ लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज इक्वल टू सॉरी प्रेशर नहीं है, मोमेंटम है. तो मोमेंटम टू द पावर ऑफ ए एंड एरिया टू द पावर ऑफ बी एंड टाइम टू द पावर ऑफ सी लिख के यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एम एल टी. फाइनली ए बी सी निकाल के और उसके बाद पावर यहाँ पे रेज कर दोगे. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा विल बी, ये तो निकाल लोगे. P is pressure, alpha, Z, K, all these things are given. Tell me the answer for this. Alpha Z by K theta is going to be 1, है ना, dimensionless quantity है. तो alpha Z, तो alpha and alpha by beta is same as pressure. Pressure is ml minus 1 T minus 2, correct. इसका डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन हमें पता है, and we are required to calculate the dimension of beta. दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो बीटा बस बच जाएगा. बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता है यहाँ पे. Z इज डिस्टेंस, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज टेम्परेचर. अल्फा को हम एलिमिनेट कर देंगे, उससे बचेगा अपने पास क्या यहाँ पे दोनों को डिवाइड करने से, Z बीटा नहीं, इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं रादर, बिकॉज नीचे वन रह जाएगा फिर.
So this by this, alpha will get cancelled out. K theta by alpha z, correct? This is ml minus 1 t minus 2. नाउ k का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या आ जाता है? एनर्जी बाय टेम्परेचर. थीटा इज एनी वे टेम्परेचर, नो, तो एनर्जी बच जाएगा ये k इंटू थीटा. k इंटू थीटा इज एनर्जी ml स्क्वायर t माइनस 2, बीटा है ना, बीटा z, ठीक है, डिवाइड बाई l इंटू बीटा. दिस इज इक्वल टू ml माइनस 1 t माइनस 2. यहाँ से अब आ जाएगा, है ना, करेक्ट? इसको तुम कर लेना खुद से, ठीक है. These four quantities का dimensional formula you have to find out. Distance over which a signal can be seen clearly in a foggy condition by a railway engineer using dimensional analysis assumes that the distance depends on the mass density, power per unit area, which is intensity, and frequency. So the engineer finds that the distance is proportional to s power 1 by n. n का वैल्यू क्या होगा? डिपेंडेंसी तुमको दे रखा है, वही वाला सेट करना है, एंड यू विल गेट द आंसर. हाउ मेनी सच क्वेश्चंस आर देयर? दिस आल्सो यू कैन डू. ये भी जे एडवांस 2023 का है, जे एडवांस 2018 का है, 2018 का है, 17, 19, 21, 20. so these all questions you try to do it on your own, ठीक है. ये 10 क्वेश्चन हो गया और HCV का ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 अलॉन्ग विथ दैट वेक्टर का शीट, ठीक है. वो करके आओ मंडे को.
कहाँ क्या कल कहाँ पे किया? सुबह का लास्ट टाइम में भी ऐसे भी अच्छा हाइजेनबर्ग तक क्या है ना ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल होते हैं maybe talk about little bit so what were the drawbacks way of both model first one was that हाँ Stark and Zeeman effect है ना what is Stark effect splitting in presence of electric field what is Zeeman effect splitting of spectral lines in presence of magnetic field doesn't make any sense because it should be unique it should be one value it should be discrete hmm? sorry और हाँ मतलब अरे according to Bohr model still at Bohr model there's no concept of Bohr model orbitals in Bohr model है ना all you have is orbit then came de Broglie hypothesis which is basically the foundation of dual match sorry dual nature of matter so he said bhai he put forward a hypothesis saying if what we assume to be wave has particle nature then what we assume to be particle has wave nature and not only that he another what way sorry what were other drawbacks of both model apart from Riemann effect um, MVR is equal to NH upon 2 pi no explanation what else only for one electron these were the three main problems with this one of which de Broglie solved this one right he said 2 pi r should be equal to n lambda and n is equal to sorry not n lambda is equal to h upon mv so mvr is equal to nh upon 2 pi comes from here okay so apart from that obviously he gave this formula for wavelength of a matter wave which is lambda is equal to h upon mv which we can also write as lambda is equal to under root 2m kinetic energy or we can write it as lambda is equal to h upon 2m q into v where v is volts and for electron this value will be root of 150 by v angstrom yeah. And then came Heisenberg he said okay if matter is a wave you can't have it in at one point so if you don't have at one point how can you tell its position velocity all that stuff he said it's now not possible and any judgment that you do will have some kind of error which will be greater than equal to h upon 4 pi okay so now in the light of de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle we again need a new atomic model because the previous one doesn't hold up at all and here comes the wave mechanical atomic model which is based upon you know what is based upon Schrodinger wave equation yeah. He assumed electrons to be they take the wave nature behavior of electron and try to derive a model okay. So before getting into that we talk about quantum mechanics so what is quantum mechanics so again the older mechanics that you know Newtonian mechanics which is called the classical mechanics which is called which is only account for the particle behavior of matter so when we understood that matter also have wave nature we had to come up with a new physics which accounts for the wave nature of the particle as well and that is what quantum mechanics is good news is that if you
take only the particle nature and discount for the wave nature, quantum mechanics still works. So it's one and all basically. You can completely kind of replace classical mechanics because it will give you the dual nature as well. If you want to just pursue one nature, you can get answers for that as well. Right? So these are the points. No need to write much of it. If there's something important, you can write. Otherwise, just read it. Right? Classical mechanics, which is based on Newton's law of motion, describes the motion of a microscopic object. But because it does not consider the dual matter behavior of matter and concept of uncertain principle, it fails when applied to microscopic objects like electrons. So if you again even in today you take a ball and you apply all the Newtonian concepts to it, it will work. But for an electron, you will not get the right values. Why would you not get the right values? Because the smaller the particle will be, higher velocity it will have more and more wave nature. Larger the particle is, the wave nature will be insignificant for that. So we developed a branch of science which is that considers dual behavior of matter in quantum mechanics, and this is the part. If quantum mechanics were applied to macroscopic particles, also gives the same results as classical mechanics or your Newtonian mechanics. Okay. Okay. So this work was done by two people, Heisenberg and Erwin Schrödinger, okay, simultaneously. And model that we're going to study, which we call wave mechanical model of atom. So that was developed by Schrödinger's wave equation. This is one form of equation, which is Hamiltonian operator of psi is equal to eigenvalues of psi. So these are mathematical operators like, those are radial probability distribution curves. Yes, we'll talk about all that. So these are like mathematical operators like plus minus, but of higher level. When you go to like graduate level, yeah, you know these operators. This is Hamiltonian. This is also इसको एक Laplacian operator also actually comes into picture, which is this one. I'll come later. But yeah, these are, you are right. So these operators basically. So again, the math is definitely above our scope of this. Definitely in graduation we'll study all this stuff. For now, we will just write. We will write this in a format that works for us. But basically, what happens is through this equation, we solve for psi. Psi is something called we call wave function. Wave function is basically represents the amplitude of the wave,
But physically, actually, it doesn't, in real world, it doesn't translate to anything. Still people are working on it. Nobody knows what it actually physically means. For example, we will learn, you might have already known, that psi square represents the probability of finding an electron in a given space. But that's so that it has a physical significance. We're also going to define a probability function, 4 pi r square psi square. That tells you the probability density of an electron in a given volume. Not in a given volume, but multiplied by volume in a space. Psi square is per unit volume. If you take multiply that by volume, you get a probability function. But we have no idea basically what psi physically means outside of the context of this mathematical work. So another thing that you will understand about this is what? All the other atoms were based on like physical experiments, understanding of physical behavior of these particles, right? And checking some, having some observations and making some conclusions from that. This is completely mathematical model. So what we do is this Schrodinger wave equation that we have, we solve for psi and we get three values which we call three quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. And then later on, 1/4 quantum number is also added from called spin quantum number later on. So we get this fourth set of quantum numbers. Huh? So after 3 also they found again why there are doublets and stuff which are not, cannot be explained by these three. So there is still further energy levels that we have not figured out. Then they added the fourth one. This actually, I'll tell you also what is the difference between 3 quantum number and 4 quantum number. So this equation, what it works for is basically an orbital. What ultimately a psi is defining, psi, what is psi? Psi contains all the information that there are about what we are going to call an atomic orbital. What is an atomic orbital? It is a 3D space around the nucleus in which probability of presence of electron is maximum. Okay, so this equation is all about orbitals. So orbitals are always defined by n, l, and m, only three. Because we have to get to electron, because one orbital can have two electrons, so there is further energy level which is outside of scope of Schrodinger. So we had to add the fourth quantum number in that because of that. Clear? So Schrodinger wave equation is basically del square psi. So you can differentiate in terms with respect to x, with respect to y, with respect to z plus 8 pi square m e minus v upon h square equal to 0. This is the equation where E is total energy, V is potential energy, everything else is I think clear. M is mass of electron, H is H. This basically, by the way, this whole thing, like if you, this is called this is, you can represent this way. So basically this of whatever x function, any function, this is called Laplacian operator. We have the module.
Hmm? Sorry, you have put slide. Previous slide. Okay. So again, matlab, we have written this, not going to be much use of us because we don't know how to solve this. But this is the equation. Basically, when you solve this, you will get three values for psi. Okay. So this is the part you really need to understand. I think if you understand these points, you pretty much understand the model. This is what it is. So one by one, we'll read this very carefully and try and understand. If this is clear, I think model will be clear. So first, the equation determines the behavior of the wave function that describes the wave-like properties of subatomic system. It solves to find different energy levels of the given system. Okay. So each value that we have, quantum number, represents some level of energy in some form. Okay. So we will talk about how do we divide that. Then second is when any electron is present in any energy state, the wave function, the psi corresponding to that energy state contains all the information that is there about the electron. Okay. So if you have psi value of electron, you know everything there is to know about that particular electron. The wave function, what is it now? What is psi? The wave function is a mathematical function whose value depends on the coordinates of electrons in an atom. Okay, and does not carry any physical meaning. Such wave function of hydrogen and hydrogen-like species are known as atomic orbitals. Okay, and the value of psi square is so I already talked about. Okay. So basically, what is the advancement from Bohr to here? So Bohr was able to tell us the city. Now this will tell us the city. Inside the city, which locality? Inside the locality, by which lane? Inside the lane, which house? It will locate the electron precisely and exactly for you.
Okay. Features of quantum mechanical model. So this is more about Schrodinger equation, wave function. What does it mean? What does it give us? Now, what is the atomic model? The atomic model, as we said, based upon Schrodinger wave equation. In this model, assume electron 3D waves which are in positive field of nucleus. Okay, and it maps it out basically. So the solution gives possible energy levels electron can occupy and the corresponding wave function of electron associated with each energy level. Each value of wave function is associated with an orbital. An orbital is the space where probability of finding an electron is maximum. Okay. So basically, actually, in the end, we will talk about that. Okay. So like this. So the what is the cornerstone of this atomic model basically from all that we have understood? Z by there is with this psi. I think what does psi represent? Psi represents for any given electron, what is the electron wave it is going to form. The electron wave का जो form, wave का जो shape आएगा, that will be called atomic orbital. And how is that wave forming? There is a positive charge, and then electron you can take as a negative wave around. Basically, so because of this, psi is sometimes also written as psi NLM.
So what are these different energy levels? What are we talking about? So one is the biggest one, which is shell, that you know already, which will be represented by the first quantum number n. Then this energy level will have some sub energy level, which are called subshells, which are represented by L as initial quantum number. Then these subshells will have further sub energy levels, which are called orbitals, which will be represented by M magnetic quantum number. And these, each of these orbitals have two slots, you know, because one is in phase, out of phase, opposite spin. To balance it out, those are electrons. So before starting, we can write, I guess, one more point, that भाई देखो Schrodinger wave equation के तीन solutions होते हैं. Fourth quantum number not from Schrodinger, है ना? Why? Because Schrodinger wave equation is all about orbitals. It's not really about electrons. It is about electron wave, but that electron wave is what it is about, and that electron wave is orbital. So they come from Schrodinger. We will write that actually later on. And this is your spin quantum number. This is for electron only. Has nothing to do with orbital. Has nothing to do with orbital. Okay. चलो start करते हैं. So quantum numbers, as we said 10 times by now, are solutions to the wave equation, three of them, and fourth is not. Shell, as I said, is given by n, which is principal quantum number. Subshell given by L, which is azimuthal quantum number. Orbital given by m, and spin of electron given by s. Out of these things, which ones are like mathematical concepts? Which one is like actual real physical things? Huh? The orbital is also physical, no? It's like a 3D space actually that you can map out. Not, there will not be like an actually legible boundary as we'll draw, of course, but it is a, like a space that you can actually mark. Huh? Sorry? Yeah, kind of volume, exactly.
Okay. So we can talk about them now one by one. First is n, principal quantum number. As we said, it represents shell in the wave mechanical model. In now, one thing with each quantum number, there will be two things associated. One is what it is representing, and second is what information, because ultimate thing is orbital. So what information does it provide us about a given orbital? So n provides two very important information about any orbital. One is what is the size of that orbital going to be. So if you have a p orbital, that p orbital, depending upon whether that is 2p orbital, 3p orbital, 4p orbital, 5p orbital, will have increasing size. That is first piece of information that it provides. The second piece of information that it provides about the orbital is the energy of the orbital. So energy of the orbital is directly proportional to the principal quantum number value. So if you have orbitals with higher principal quantum number, they will have higher energy. So two pieces of information. What are that? What are those? Energy of the orbital and size of the orbital. Okay. बाकी ये this part तो you already know. Angular momentum of an electron in an orbit, again we know this is correct, comes from Bohr and verified by de Broglie. Number of electrons in any given shell are 2n square. Number of orbitals, sorry, not orbitals, number of subshells in a given shell are equal to n. So first shell will have one subshell, second shell will have two subshell, third shell will have three subshells, and so on. And in any given shell we have two l we have n square number of orbitals. Shell has n subshell, n square orbital, and 2n square. Okay. Now second is azimuthal quantum number. As we said, it will represent subshell.
and the information that it will provide are again two. First and the major contributor it is to the shape of the orbital. So whatever that 3D wave is, what is the shape of that wave is going to look like? That is determined by azimuthal quantum number. So if your azimuthal quantum number value is L equal to 0, that means you will have S subshell, and S subshell is spherical in shape. We will talk about where these shapes come from abhi in a little while, maybe not today, maybe next class. We will talk about where these are called angular distribution curves. Basically, we'll come to that. If you have L equal to 1, then your shape is going to be dumbbell. If this is 2, then it is double dumbbell. But I do forget, I'm writing dumbbell. I forgot the spelling of dumbbell. It's like dumbbell. What is the spelling? Dumbbell only? Okay. This is इसका shape तो बढ़ते नहीं वैसे leaf like होता है or you can just not write the shape, it's abstract also, you can take that, it's generic shape. Okay, so that is the first part. It corresponds to the shape of the electron wave or the orbital. Second piece of information it provides, and this is the point that you have to remember, we should write it somewhere, that this corresponds to energy as well. Now in certain cases it does, in certain cases it doesn't. So what are the cases it does and what the case it doesn't? So for for single electron system, okay, for a single electron system, energy is only dependent on n. L has no role to play at all. But in a poly-electron system, two to any number of electron, okay. But for two or more electron system, energy value is dependent upon n plus L value. Whichever has higher n plus L value will have higher energy. This is called Abbo principle. We will come to that in a while. Okay. So L is a definite contributor to shape at all times, and sometimes it is a contributor to energy depending upon what kind of systems are we dealing with. Are we dealing with one electron system, then it is not a contributor, only contributor to shape. But if it is a poly-electron system, then it is contributor to energy as well as shape. Okay, that is one part. So it represents subshell. It gives information about sorry, energy and the shape of orbital, and the values that it can take mathematically are from 0 to n minus 1. So if you have n equal to 4, that means your L will be 0, 1, 2, 3, and each of them will be representing a subshell. So basically for 4, n equal to 4, you can have which set of subshells? You can have 4s, 4p, 4d, and 4f. Similarly for n equal to 3, your L values will be 0, 1, 2. That means for 3, you can have 3 subshells which are 3s, 3p, 3d. You cannot have 3f. Okay. Similarly for n equal to 2, so you can have L values can be 0 and 1. So that means for 2, you can have 2 subshells, 2s and 2p. For 1, L can only be 0. That means you can have only 1s orbital. That's it. Sorry, 1s subshell. Okay? Clear? Yes. Yes. So S, P, D, F, n equal to, what do you say? Huh. L equal to, then so you just go alphabetically. G, H, like that. Well, again, this is a hypothetical because 120 elements that we have, we never have to use that. But if you have to, again, mathematics, this is a whole mathematical thing, you can go anywhere. So you continue G, H, and so on. Okay? Done?
Now, so this is a different movement of the electron in orbital. For that, we have orbital angular momentum. So one is this spherical rotation. One is this. There are three basically movement the electron has. Which is having. One is this rotation about the electron, right? Rotation. I always get confused. Rotation. What is the other one? Revolution. This is what. Alright. So this motion it is having for that which account for NH upon 2 pi. Then this is the 3D wave motion within that. This will account for that. And the third motion is the spin one. That will be accounted by spin angular momentum, which will be again h by 2 pi root of ss plus 1. Okay. That's the first part. Second, how many number of orbitals are present in a subshell? In any given subshell, you will have 2l plus 1 orbitals, and by that, naturally, how many electrons you will have? Twice of 2l plus 1. Okay. What will be orbit angular momentum? Will be how much? Hmm? Huh? What? What will be orbit angular momentum? How much? What? What is the formula for orbit angular momentum? Hmm. NH upon what are you guys talking about? Wait, this is not orbit. This is not orbital. This is also orbit. 3h upon 2 pi, which we can also write as 3 h bar. And what will be orbital angular momentum? This will be h upon 2 pi under root of L plus 1. P we can say L is equal to 1. That means h upon 2 pi. Okay. Don't get confused. Next is magnetic quantum number. So again, what does it represent? It represents the orbital. So the values of m are the values that we are assigning to the orbital. What information does it provide about the orbital? One of the most important pieces, which is now we have the, from n we understand the shape, sorry, from L we understand the shape, from n we understand the size, right? So if I say S, you instantly imagine spherical. If I say 1s, 2s, 3s, you can imagine increasingly bigger. Or S is not the right example. We can talk about P. So if I say P, you understand कि भाई
there is, okay, let me write this out. So if I say n equal to 2, instantly means what? L values are going to be 0 and 1. If I have L equal to 0, this means S. If I have L equal to, this means P. And also I know how many orbitals P will have now. P will have 3, 2L plus 1. What are those values? Minus L to L, minus L to L. So if this is 1, then P will have how many orbitals? 3, minus 1, 0 and 1. They will have this value. Okay. So what information, what is, basically we have 3 P orbitals. So what information magnetic quantum number provides us ki now if what those 3 orbitals, how are they oriented in space? Okay, how are they oriented in space? That information is provided by, so every unique value of M represents a unique position, orientation of any given orbital in space around me. Okay. So three orientation will be what? X, Y, Z. And 0 will always have the Z value. These values can be interchangeably again. Z, IUPAC has set the standard as internuclear axis. So Z will always get the N0 value. The others values are exchangeable. You can call the minus 1 Px, Py. Okay. This I think I already told you. Each orbital now we have all the information that we need about an orbital. We need the shape, we have it. We need the size, we have it. We need the energy, we have it. We need the orientation, we have it. We have all the information. So if you have an LM, you can identify it. So if this is given, for example, 420, psi 420, what does this mean? This means they are talking about 4DZ orbital. You understand? तो इसमें सिंपल 4DZ ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं DZ कर देता हूँ, फिर P कर देता हूँ, तो 1 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 4DZ
Sorry. Yes. Those are exchangeable. -1, +1, -2, +2. Only along whatever is along z-axis that has to be 0 because that's the standard intermediate. Okay, भाई चलो स्पिन क्वांटम नंबर. ओके स्पिन क्वांटम नंबर पहले इसका सिर्फ पूरा टेबल एक साथ ही बनाते हैं. पहले लिखा भी देते हैं. तो व्हाट हैपेंड एज आई सेड कि डबलेट्स मिले हमको. तो डबलेट्स मिले ऑर्बिटल्स के अंदर. व्हाट डज दैट सजेस्ट? सम मोर एनर्जी लेवल. So to account for that, they gave spin quantum number. Acha, one thing I didn't say about M, I don't know whether it was written or not. How many electrons can be inside an orbital? How many electrons can be inside 4d orbital? How many electrons can be inside 5f orbital? What is your answer? So, no matter what the orbital is, what you're thinking is subshell. Any orbital, one in phase, one out phase, 1 plus, 1 minus, 2 electrons, that's it, balanced, everything, there's nothing else. Okay, do not ever get confused with this. Any orbital, no matter what that orbital is, it can maximum hold 2 electrons. है ना? That's why we will draw orbitals, we will draw like plus, minus and phase in phase. Okay, what are we doing? ये हो गया spin quantum number. Okay, so what is that fourth quantum number? That fourth quantum number is S, sometimes also written as MS, don't get confused. And what are the values? Plus half minus half. Very simple. What does plus half mean? Huh? That no, anything can be anything. All plus half minus half represent our opposite. If you assign the up spin or clockwise spin plus half, that means counterclockwise is going to be minus half. If you apply, if you assign counterclockwise plus or downward plus, then the upward is minus or counterclockwise. Okay, so it's not fixed
The general trend is to take the clockwise to be plus half, counterclockwise to be minus half, but it's not standardized. Okay, anything can be assigned anything. They just mean opposite values. This thing, by the way, is responsible for one behavior of everything in this world. What is that behavior? Magnetism. Everything that is from that's why every matter can be magnetized, can have magnetic behavior, including earth and everything. This is responsible. That's why this magnetic moment concept also comes into picture here. Bm is, you know what? This is the unit of measuring spin magnetic moment. You know what is the full form of this? No? It's Bohr magneton, named after Niels Bohr. You guys know the concept of paramagnetic, diamagnetic, ferrimagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, all these concepts, you know? No? No? What do you know what? What is paramagnetic? It's a charge. The domain say or electrons, you say. If you're talking physics, I think we'll talk about domain. Here it's electron. Paramagnetic is basically when you will have some unpaired electron. That is paramagnetic. We'll talk about all in detail, but for now you can just talk about two. One is if there is bonding, anti-bonding, whatever such lot. No, therefore two are there. If you have one orbital, you have two electrons. They will cancel each other every property. Okay, and if there is odd electron, then it will be unbalanced. है ना? So that is what paramagnetic is, having unpaired electrons, and diamagnetic is having zero unpaired electron. And when you put a diamagnetic substance in a magnetic field, it creates a magnetic field inside the diamagnetic material feebly in the opposite direction. So if you have a magnetic field in this direction and you put a diamagnetic material in this diamagnetic, how will we define it? Number of unpaired electrons, zero. It will feebly, very weak field will be developed in the opposite direction. And you have n equal to non-zero. Again, there are much more classifications of this which we will get to at the end of this chapter. In fact, in actually solid state, not here so much.
n equal to non-zero, then it is whatever your substance is that will be magnetized in the direction of the magnetic field. There are actually much more classification, like in paramagnetic you can have ferromagnetic, ferrimagnetic. Ferromagnetic is something which will be permanently magnetized, heavily magnetized and all that, but we'll go there later. Now only you have to remember two things for now. What? Paramagnetic, which means there is non-zero unpaired electron present in the atom, and if it is paramagnetic it can be magnetized weakly in the direction of the magnetic field, है ना? And the other is diamagnetic. Diamagnetic means zero unpaired electron and it will magnetize feebly in the opposite direction to the external magnetic field in which it is placed. Okay, ठीक है, वापस आते हैं इस पे, ये लिख लिया पूरा. Oh, oh, what did I write? L plus which is so orbital angular momentum, no? Okay. Okay. Before this, now let's get into. So let's build this. N L M S. N is equal to 1 means L equal to 0. That means यहाँ पे मैं सबसे और elaborate बनाते हैं. Let's put this subshell. Okay. So 1 0 means what? Which subshell? 1s subshell we are talking about. 1s subshell का m क्या होगा? 0. So which orbital? 1s orbital, or you can just simply write s orbital or 1s orbital, and s will be plus minus half of that. Correct? If I have n equal to 2, then this will be 0 and 1. This will be what? 2s. This will be what? 2p. This will be what? 0. This will be what? 2s. This will be what? Minus 1, 0 and 1. This will be what? 2px, 2py, 2px, 2py, or I can write like this. Other way I can write it like this: 2px, 2py, 2pz, and these are interchangeable. है ना? This will be what? Same. Plus minus half, plus minus half, plus minus half. ठीक है? चलो नेक्स्ट में नेक्स्ट पूछता हूँ. तो यहाँ लिखूँ, पेज कम पड़ेगा. 3 is again 0, 1 and 2. I can't write here. Next page. The one interesting thing we can do is prove what we talked about. So we said in a shell, तो इसका भी diagram बना ही देता हूँ. That I can do here. So let's talk about this shell, subshell, orbital, electron.
तो वी कैन से शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं n, सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 2n+1, ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n, एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 × 12+1। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने, सॉरी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी दिस तो नॉट नीडेड, शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, शेल के अंदर होते हैं n² ऑर्बिटल, है ना? Clear? Anything I've missed? Every other relation is established, right? सेल के अंदर ऑर्बिटल, हाँ सेल के अंदर ऑर्बिटल किया, सेल के अंदर सबशेल किया, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किया, सेल के अंदर सबशेल भी किया, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल किया, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किया, फिर ओके, all these are all the possible relations that are there. Is this clear? Now we can put this to use here. So let's look at 2. In 2, how many subshells are there? 2 subshells are there, I think. Correct? How many orbitals are there in this? How many orbitals? 4, which is 2 square. 1 orbital, 2 orbital, 3 orbital, 4 orbital. The total number of orbitals is what? 1, 2, 3, 4. N is equal to 2. 2 square. How many electrons? 2, 4, 6, 8. Which is 2 into 2 into 2. That is 8. In a subshell, how many orbitals are there? 3 and 1, which is 2l plus 1. How many electrons in a given subshell? 2l plus 1 into 2. Clear? So 12 plus 1 will be what? 3. 3 into 2, 6. How many total electrons? Clear, boys? This part is, you can figure out. Let's take it further. Okay. Let's make the next one. So again, N, L, subshell, M, orbital, S. So N is 3, L is 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 0 is what? 3s. M is what? 0. Orbital is what? 3s. This is what? Plus minus. 1 will be what? 3p. This will be what? Minus 1, 0, 1. Minus 1 will represent 3px. This will represent 3pz. This will be representing 3py. This is what? Plus minus half, plus minus half, plus minus half. 2 will be what? 3d. What is 3d? Minus 2, 0. Sorry. Minus 2, minus 1, 0, 1. This will be xy, yz, z square, zx, and x square. Again, these are all interchangeable. This is the one which is fixed. And this is plus minus half, plus minus half, plus minus half, plus minus
So from looking at this, what can we say about Bohr's idea of orbit? It wasn't wrong, it is primitive. It wasn't wrong because he's saying that an electron is present is n equal to 3, which it is. But inside the 3, there are now all these sub-energy levels. Huh? Yes, he only got to n, he only got to the city. He didn't find out which area, which lane, which house. But here, we have the complete postmark address. In third shell, if we are talking about this particular electron, which is plus half here, what is it? It's very specific. It's the third shell inside which you have the L equal to 1p subshell. In that you take the z orbital out of which we are talking about the upward spin electron. So literally you have identified, located the electron which we said in the theory in the beginning. What is it? What is all these quantum? There set of coordinates within an atom to like locate an electron. Yes, but we don't locate it like Bohr said with specificity. Now with considering everything, we locate it with probability. Yeah. So this is basically what probabilistic location of electron wave. Done? Okay, so okay, questions so going to be easy only. This is the done. What is the answer? What is the answer? A n square. But every orbital will have a plus half. Every single orbital will have a plus half. It's like there is no orbital which not have plus half. What? How many total orbitals? N is equal to 5. Then our number of orbital is n square. It is 25. What is the answer? Two. N equal to 3 will have 1, n equal to 4 will have 1, that's it. N equal to 1, n equal to 2, they will not have it. And they're talking about orbitals. What if they're talking about subshells? So that's 2. What if they're talking about orbitals, for example? What will you say? No, no, you don't consider interchanging. Ultimately, interchanging is, well, you can put any value to any value, but you're going to put one value to one orbital only. No, one value of m is corresponding to one orbital. You don't confuse it with other stuff. What will be? So, same number. By the way, how do you get this? Again, one more time, just to be clear. N equal to 1, L equal to 0, M0, this is out of contention, N equal to 2, L equal to 0, 1, out of contention, N equal to 3, will have L0, sorry, minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. N equal to 4 will have L equal to
L equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay. So how come the answer is 2? Which 2 are we selecting when we saying the answer is 2? Oh, sorry, I wrote m values. What's my L is equal to 0, 1, 2. L is equal to 0, 1, 2, 3. So what are we selecting? We are selecting 2 and 3. है ना? Because 3 will have a set of -2 and this will also have a -2. Okay? And if we are talking about orbitals, still the same. Answer would have been same. Write this question. Write this question. Write this question. Hmm? Very unlikely that 2 would be correct. It is spin. This is magnetic ML. Basically, this is L, this is S. Sorry, this is not L. This is M and this is S. M is sometimes represented as M or ML, as similarly S is represented as S or MS. No, 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 no. M or ML, they mean the same thing. Similarly, S or MS mean the same thing. Okay, you can write that in the notes, whatever representation part. That's why you're getting this. But I wrote this in the spin, no? I wrote this in spin. Huh? अच्छा वो प्रॉब्लम हुआ ओके कोई नहीं now you know hmm? Okay, you can figure this out. So n equal to 4, L can be 0, 1, 2, 3, 4. So 1 can have -1 plus 1, 2 can have -1 plus 1, 3 can have -1 plus 1, 4 can have 4 में 4 कहाँ से होगा भाई
That's it. That's your answer. What is the answer? Okay. And each of these orbital will have a plus half minus half. So each orbital has to be considered once only. You see, no matter this is an advanced question, but we can solve all these questions pretty easily. Difficulty hand. Okay, bhai, wait. What is this? That's M. Okay. Hmm? So n equal to 5 means L equal to 0, 1, 2, 3, 4. This will have M equal to plus 2 orbital. This will have M equal to plus 2 orbital. This will have M equal to plus 2 orbital. That's it. 3 orbitals. That's it. अच्छा, this question you can't. ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ गया? आ गया। अच्छा, ये क्या एनर्जी का क्वेश्चन है क्या? चलो ठीक है, बता दो। n प्लस एल जिसका हायर होता है उसकी हायर एनर्जी होती है। एंड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, इसको एबो प्रिंसिपल कहते हैं। विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सेम n प्लस वैल्यू which is the major contributor to energy? n. So for same n plus l, higher n, higher energy. What is the answer? A or C? ये सब बाद में करते हैं, इतना ही चलो बस। Now you can all do all questions of quantum. अरे you are supposed to discuss. You have to remind me in the beginning of the class. I totally forget. Remind me in the next class. Did you guys do everything though? Okay, चलो ठीक है, तो you'll get the now the Sunday you'll be able to do. And if you get time, you can do everything related to the quantum number. There's a, I would say at least 2 class stuff is remaining. One we have to like basically get into the psi and mathematics of that a little bit. And one is all this electronic configuration, Pauli principle, Abbo principle and all that stuff. So 2 class stuff is remaining. So wave mechanical model you will not be able to do entirely. But I think quantum number question you'll be able to see and you will be able to do if you get time. If you don't want to do, just at least finish the previous work that you had. ठीक है, but I, yeah, 2 more classes.